From the Mumbai studios of Republic TV, it's time for The Debate. As part of Indian Navy's Operation Samudra Setu 2, naval vessel INS Trikant arrived at Mumbai's naval dockyard from Qatar. कोविड-19 की इस महामारी पर अब एक सहयोग जहां तक इंडियन नेवी की ओर से दी जा रही है। समुद्र सेतु 2 जो कि मिशन इंडियन नेवी की ओर से लॉन्च की गई है, उसी के तहत आज इंडियन नेवी शिप त्रिकांत जो है वो मुंबई पहुंची है। आपको बता दें कि INS त्रिकांत जो कि 5 मई को कतार में पहुंची थी और जितने भी एसोसिएट सामान हो, जो कोविड-19 के जो रिलीफ मटेरियल हो, इम्पॉर्टेंटली 20 मेट्रिक टन्स के 2 सिलेंडर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं जो कि कतार से लाए गए हैं। टोटल कुल मिलाकर जो है 40 मेट्रिक टन्स लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो आज मुंबई पे लाए गए हैं और कहीं ना कहीं पर एक तरफ सहायता जो है अब लोगों को ज़रूर मिलेगी। हालांकि ये जो मिशन है, मिशन समुद्र सेतु 2 के तहत जहां पर इंडियन नेवी की ओर से ये मिशन लगातार की जा रही है और ये मिशन लॉन्च होने के बाद लगातार इंडियन नेवी की जो शिप है वो दूसरे कंट्री पर जाकर ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन और दूसरे अन्य इम्पॉर्टेंट जो कि कोविड रिलीफ मटेरियल हो, जिसमें से फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो या फिर N95 मास्क हो या जितने भी दूसरे रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ों को लेकर जो है अब मुंबई तक लाया जा रहा है। INS Trikant's commanding officer Captain Harish Bahuguna spoke to Republic TV on the importance of the mission. हमारे साथ कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन हरीश बहुगुणा जी है। सर, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इंडियन नेवी की इस अहमियत को पहचाना और मैं आपको और आपके माध्यम से एक बार ये देशवासियों तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि भारतीय नौसेना किसी भी चुनौती के लिए हर समय तैयार है। नौसेना का काम ही है कि मैरीटाइम डोमेन में कोई भी चुनौती आए उसे सक्षम तरीके से पूरा करना और राष्ट्र के काम में, राष्ट्र हित में कोई भी कार्य है उसे आगे पहुंचाना। अभी एक बहुत ही नोबल मिशन जो चल रहा है, जो हमारी राष्ट्र की तरफ से चल रहा है, जो अभियान चल रहा है ऑक्सीजन एक्सप्रेस और जगह जगह से लिक्विड ऑक्सीजन को मुहैया कराने का जो हमारा अभियान है, उसको आगे ले जाने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया है। जैसा आप लोग जानते हैं, उसी के तहत कई सारे हमारे युद्धपोत जो कि पूरे अरेबियन सी में वेरियस कई जगहों पर डिप्लॉयड थे, उन्हें तुरंत ही फिर से तैनात किया गया और हम लोग मध्य पूर्वी देशों में खास करके कुवैत, बहरीन और कतर में जाकर वहाँ से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ में कॉन्सनट्रेटर्स और अदर एसोसिएटेड मेडिकल सप्लाईज़ वहाँ से लेकर अपने देश तक पहुँचा रहे हैं। हमें इस बात से बहुत ही संतोष मिलता है और बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमारा ये योगदान कहीं ना कहीं हमारे भारतवासियों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए ये कारगर सिद्ध होगा। और मैं आपके माध्यम से ये भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि राष्ट्र के इस अभियान में जितना हमसे बन पड़ेगा हम ज़रूर करेंगे। Captain Bahuguna also talked about the challenges faced by the Indian Navy. चैलेंजेस किस तरीके से सामने आ रहे हैं? जहाँ तक ये चैलेंजेस की बात है, नेवी नौसेना तो चैलेंजेस को फेस करने के लिए ही बनी है। तो चैलेंजेस से हमें और ऊर्जा मिलती है, चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमें और शक्ति मिलती है। तो चैलेंजेस से हम अडिग नहीं होते, लेकिन ये ज़रूर है कि उन चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए नए उपाय सोचे जाते हैं। अभी हमारे जो युद्धपोत हैं वो कंटेनर्स को लाने के लिए नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी हमारे हेडक्वार्टर्स ने तुरंत ही एक बहुत ही सेफ़, सिक्योर SOPs का प्रोमलगेशन किया, जिनको फॉलो करते हुए कुछ माइनर मॉडिफिकेशन और चेंजेस के साथ हर वॉरशिप ने अपने आप को तैयार किया और आज बड़ी
सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ हम ये लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन विदेशों से अपने देश में लेकर आ पा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे फेलो कंट्रीमैन जो ज़रूरतमंद हैं उन तक ये मदद पहुंचेगी और राष्ट्र के अभियान में हम अपना पूरा योगदान दे पाएंगे। Apart from INS Trikant, INS Airavat also arrived in Visakhapatnam carrying cryogenic oxygen containers, oxygen cylinders and other essentials from Singapore. Bureau Report, Republic TV. Indian Army's Western Command has set up a 100-bedded hospital in Chandigarh, and that exact location is in Punjab University's International Youth Hostel. This hospital is being prepared by the Indian Army's Western Command, and in fact the entire staff and doctors would be available of Army. Right now we are standing inside the hospital. We will show you the kind of facility they have prepared, just because today is the first day when the hospital is being inaugurated, and in fact from today this hospital will be open for the patients. The patients who are getting the reference from the government hospitals only, they will be admitted here. You can see the facilities. All the 100 beds are with the concentrators, with the oxygen support, and in fact this is one room and 3 beds in each room. You can see the visuals that Army is handling all the operations of this hospital, just because the administration has given this building to the Indian Army, and Indian Army has prepared the beds along with the concentrators, with the oxygen support and all the facilities that are required for the COVID patients. 100 bedded of this hospital would be a great help for the people who are searching aggressively for the oxygen support beds in Chandigarh, and even this is open from today onwards. Operation Namaste is being given to this hospital, and in fact you can see that they are handling all the operation. All the staff, all the doctors would be available here are from the Indian Army, and even the UT Health Department is also assisting the Army for the operations and the functions of this hospital. The entire room, one room, 3 beds would be available, 3 patients in one room with the social distancing and with the oxygen cylinders, with all kind of machines, with all kind of pressures are here, the entirely taken care by the Indian Army. This is the first hospital set up by the Indian Army, and within days this building has turned into the hospital, from hostel to hospital, and in fact this would be operational from today. They will start taking the patients from today onwards. As it's been briefed earlier, this hospital's request had come from Chandigarh administration, as the burden on the 2-3 hospitals which they have was quite a lot. So to ease out this burden, we have moved a field hospital from our rare areas, and we have brought in this field hospital which is fully equipped to take on 100 beds in terms of L1 and to some extent L2 facility. They are here with their complete equipment, manpower, paramedics, doctors, and this building has been given to us by Chandigarh administration. The complete beds, bedding and operational part is left to this hospital and its staff. So we hope that in coming times, since we are able to take on some load of these hospitals, the burden would be reduced in the district hospitals and state hospitals. 800 oxygen beds have been set in place and have been made arrangements for at the Chennai Trade Center here in Nandambakam, where we are at, by the Tamil Nadu government as well as the Greater Chennai Corporation. 300 of those 800 odd beds will be ready for occupancy for COVID patients starting tomorrow, that is on Tuesday. Tamil Nadu's Chief Minister M.K. Stalin had visited this COVID Crucial Care Center CCC on Friday, that is May 7, just moments after he had sworn in as the Chief Minister, and inspected the area as well to look into the preparations that have been set in place. Over 1,000 COVID beds can be set in place here at the Chennai Trade Center, 300 of those which will be open for patients tomorrow starting treatment, and 800 out of those 1,000 beds will have an oxygen supply as well. As you can see, all necessary arrangements have been set in place here at Nandambakam, and if you can see, there is also a central
line that has been given for oxygen as well. Each oxygen supported bed can serve up to 10 liters of oxygen per minute, and there is a central distribution line and an O2 flow meter that has been set up for all the COVID patients who will be receiving treatment at the crucial care center over here. Each and every bed has an additional seat for an attender as well as the patient themselves. They have a separate bucket as well as fans and oxygen flow meters that have been set up for them to regard and to look into their oxygen levels as well. A nurse's station has been installed at every nook and corner of this facility that has been provided. Tomorrow, almost 300 of these beds, that is this ward where we are at, will be open for patients, with preparations that are going on for the next 500 beds that will be setting up. Wheelchair facility has been set in place for those COVID patients who will be unable to walk due to the fatigue as well as due to the symptoms of the virus as well. All necessary precautions that have been taken place as well as sanitization, and the medical staff have all been equipped here to ensure that patients who do come in here for getting treatment are able to recuperate well and will be treated with the best of the facilities. The Tamil Nadu government has also kept in mind that more and more COVID centers, COVID care centers need to be opened up for the general public, and several other centers have also been discussed in the meetings that have extended with Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin along with the Health Secretary and the Chief Secretary to ensure that more people are able to avail similar kind of care and treatment owing to the rising cases of pandemic here in Chennai as well as in Tamil Nadu. Well, if you see, I am currently present at the MGR railway station in Chennai, and you can see the pictures where huge amount of the migrants have been gathered over here. As if you see, M.K. Stalin, the Tamil Nadu newly elected Chief Minister, also allotted lockdown from May 10 to May 25. So the people who have wanted to, who are daily laborers and the people from different states have also been gathered at the Chennai Central. As if you see, there are no places for them to stay. So they have been started to stay over here in the Chennai Central, and you can see the pictures of large number of people getting gathered in the Chennai Central over here. Also, if you see the COVID norms or the guidelines which is given by the government is not even followed, no social distancing is being followed, and along with that, you see people are not wearing masks, and also there are a large number of people getting gathered in the Chennai Central railway station to go to their states. As you see, people from different states, West Bengal, Manipur and Bihar are also been working over here, and they have been staying here. They have been claiming that only a few trains have been allocated by the government, and only few trains are running for a few days. So if you see, people are being gathered in large numbers. So this is the first day in lockdown, and you can see the pictures where huge number of people have been gathered over here, and they have been sleeping in the wave path over here. And also along with that, the first day of lockdown, the people have started to gather in the railway station over here, as people have been claiming that the owners have sent them back as all the industries to be closed, and also only 50% of the working capacity in some companies. So the majority of people have been telling that their owners have been they have sent them out, and they have been trying to go for their home states also. We'll also go across some of them who have been waiting here. कितना देर से वेट कर रहे हो? काल शाम को आया, इधर में वेट कर रहा है. कहाँ जाने के लिए वेट कर रहे हैं? कलकत्ता जाने के लिए. अभी क्या बोला, ट्रेन दिया जाएगा या तत्काल ट्रेन साला कुछ लगाया गया है? नहीं, ट्रेन आएगा. आपको बोला है ट्रेन आएगा? आप क्यों मतलब लॉकडाउन से लग वजह से जा रहे हैं क्या? नहीं, वो टिकट कैंसिल नहीं हुआ ना, तो ट्रेन आएगा. 7 बजे ट्रेन फिर निकलेगा. So they have been claiming that they have booked the tickets long back, and they have been waiting. And also, if you see, the ticket was booked 2 days back, and also they have booked the ticket for yesterday, but still the train haven't come, and they are expecting a train to come today or tomorrow, as the lockdown has been implicated in Tamil Nadu. We'll also go across some of them who are waiting here from since morning. Sir, कितना देर से वेट कर रहे हो आप? हम तकरीबन 2 दिन से. 2 दिन से. घर जाने के लिए क्या, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम आया केरला से, कन्नूर. तो आप कभी घर जाने के लिए इधर इंतजार कर रहे हैं क्या? अभी मेरे को तो बुधवार को ट्रेन है, लेकिन बोल रहा है वो टिकट नहीं है, कंफर्म नहीं है, फिर वोटिंग करना पड़ेगा लगता है. Because of this lockdown, there are no work for them. People, there's no employment for them, and the owners have also been sent them to the home, and they will be waiting from yesterday for the trains. And along with that,
They have been claiming that we need to go live for our survival, so we are going back to our hometowns for our survival. Right now we are reporting from COVID war room that has been set up by the Srinagar district administration, and this center, the room receives minimum 100 to 200 calls from symptomatic or asymptomatic patients, the patients who are in need of help, whether it is related to oximeter or some patient needs to be lifted from home and needs admission in some hospital, or for that matter some medicine is required, or for that matter oxygen cylinder is required. These people working on ground 24/7 provide helping hand to all the people who are within the district administration of Srinagar. This center was set up by the administrator although last year, but it's continuously functioning and provides a helping hand to the patients. At the same time, we are also seeing the Srinagar district administration have set up recently the oxygen plant at many places so that the hospitals become self-sufficient as far as the COVID-19 cases are concerned. If we talk about Jammu and Kashmir, we are seeing surge in the cases because every day now for the last 2 weeks we are seeing that the figure has crossed 5,000. And if we talk about the deaths, yesterday some 54 deaths were reported in Union Territory of Jammu and Kashmir. Despite the tall claims made by the authorities here that the vaccination is available on ground, no vaccination is available as far as the district hospital Budgam is concerned. This hospital is running out of stocks for the last 3 days, and the people who had come here to take the jab have to return back without taking the jab. If we talk about the UT administration, the points, the programs that they are taking to break the jab, like they have extended the Corona curfew till 17th of May and asking people to stay indoors. Although the administration is making tall claims that the facilities are available, but people on ground are not only running for the oxygen supplies but for medicines, and also the call is coming for the ventilator beds. We have been seeing the spike in UT as far as the COVID-19 cases are concerned, and this time the UT is touching somewhere around 50,000 mark as far as the COVID active cases are concerned. If we talk about yesterday, some 5,100 plus cases were registered in Jammu and Kashmir with 54 deaths. With Vijay Firdoswani, this is Zishan Fazal for Republic Media Network in Budgam. At a time when Union Territory administration has announced a Union Territory-wide lockdown in Jammu and Kashmir, the visuals coming from the fruit and vegetable mandi in Jammu are really worrisome, as hundreds and hundreds of people have gathered here just to buy the fruits and vegetables, and this is what the triggering panic is. I request Harshit to show you the visuals that how people in large numbers have gathered, be it on this side or on the other side of the road. The people, they have gathered here to buy the essentials, but this is what the Jammu and Kashmir government doesn't want, and as they have given a clear instruction that no gathering more than 25% will be held at a single place. But here hundreds and hundreds of people, they have gathered at one place and giving an open invitation to the widespread of COVID-19. We have seen how the number of cases are on continuous spike, but despite the fact that the Jammu and Kashmir health infrastructure is under immense pressure, these people hardly pays heed to the reality, and that's why they have gathered here in large numbers. And this is really worrisome because the number of active cases in the Union Territory of Jammu and Kashmir as of now has surpassed the 50,000 mark, as it was 49,500 yesterday, and it has crossed the 50,000 mark by today. And the death toll of Delhi in Jammu and Kashmir is also worrisome, as around 50 to 60 deaths are being reported on a daily basis. But the situation remains the grim. But these people who are out in open are posing a serious threat to the Jammu and Kashmir, as they can be the COVID carriers and they can spread it like anything, as hundreds and hundreds of people have gathered here just to buy fruits and other vegetables.
as the state of Kerala battles out the second wave of COVID. The numbers have been rising. In the last 24 hours, there were 35,801 cases recorded in the state of Kerala with a high test positivity rate of 28.88%. I'm right now at the Thiruvananthapuram Medical College, where all the critical COVID cases are brought here. This is the sole government institution where the critical COVID patients are brought here for treatment. There are 183 ICUs in this very hospital, and all the critical care for the patients are given here. People who are with mild and moderate symptoms are all handled in the first care treatment centers as well as in second care treatment centers. In Kerala, relatives of patients cannot be anywhere near these hospital premises, and that is why, as you see in these visuals, there are no relatives or relatives of COVID patients who are waiting outside one of the in front of the main critical care centers. So in total, Kerala has had a tough fight. It is amongst the top 3 states which is having high COVID infections. The total cases in the state of Kerala has touched almost 19 lakh, and the active cases in the state currently is 4,23,514. The state is battling out with its efficient, robust health system, which has ensured that the total death rate is kept very low when compared to the rest of the states. From our sources, we begin to understand that the existing crematoriums in the state are working overtime. In last 24 hours in the crematorium, more than 38 bodies were cremated, and the total death in the state of Kerala in the last 24 hours, official record states that it is 68. So Kerala's battle against the COVID pandemic is streamlined. The state has put robust mechanisms in place to avoid all sort of confusion. The state currently has oxygen surplus. It has definitely asked the central government for an extra 1,000 MT, and it has requested. Meanwhile, the centre has also granted for the COVID fight 243 crores grant as a first installment to the three panchayats levels, the district panchayat, municipal panchayats of the state. So all in all, there's a tough fight going on. India is battling it together, and Kerala, with a streamlined system in place, is handling the COVID in the best way possible. Though there is a surge in COVID cases day by day in the state of Telangana, but still we see many people not following the COVID guidelines, let it be not wearing mask or not maintaining social distancing. Well, we are here in Secunderabad area, and you can see many people moving from one place to other place, but still many seen not maintaining social distancing and also not wearing mask in public places, as the state government has clearly announced that wearing of mask in public places is compulsory, despite banners put in place that if one found not wearing mask, then a fine of ₹1,000 will be imposed on him or her. But at the same time, we see there is a negligence from citizens who do not continue to follow the COVID norms, and also the Chief Minister K. Chandrasekhar Rao has stated and urged people to maintain COVID protocols, and also ask people to make sure that all the COVID protocols are being implemented and put in place. And also at the same time, the state government has announced that only 100 people will be allowed in marriages and only 20 people will be allowed in funerals, and making sure all the COVID guidelines are put in place so that we can combat COVID-19 in the state. देश भर में जहां कोरोना के महामारी को लेकर के लॉकडाउन की स्थिति है, वहीं उत्तर प्रदेश में इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कानपुर के सपा कार्यालय की, जो कि ग्रामीण सपा का कार्यालय, वहां देखिए
तमाम लोग जो कोविड की प्रोटोकॉल्स उनको फॉलो करते नहीं नज़र आ रहे हैं। हालांकि मास्क तो लगाया है लेकिन किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और इस वक्त जब लॉकडाउन है, लोगों का निकलने पे पूरी तरह से प्रतिबंध है, वहीं इस तरह की तस्वीरें आपको हम कानपुर से दिखा रहे हैं, जहां देखिए तमाम लोग यहां पर निकले हैं और एकत्रित हुए हैं। तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग हैं जो यहां दिखाई दे रहे हैं एक साथ। वहीं जब पुलिस पहुंची, इनको रोका, तो अब इसके बाद ही इन्होंने अपनी सभा को समाप्त किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कानपुर के सपा कार्यालय से, जहां देखिए साफ तौर पे किस तरह से जो सपा के कार्यकर्ता थे उन्होंने कोविड के नॉर्म्स को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं। और वहीं लगातार एक भीड़ है जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए तमाम लोग खड़े हैं और ये लोग किसकी परमिशन से यहाँ आए हैं, क्योंकि इनके पास किसी तरह से कोई परमिशन नहीं थी। चूँकि पुलिस भी मौजूद है, पुलिस भी लगातार इन लोगों से कह रही है यहाँ पर सर लॉकडाउन है, आप लोगों को आने की अनुमति किसने दी? अनुमति क्या, पार्टी कार्यालय के बधाइयाँ एक दूसरे को दी जा रही थी, बाकी सभी लोग लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं। लॉकडाउन में निकलना मना है, सब जगह निकलना मना है, ये तो बात सही है, पर आप लोगों को कैसे परमिशन ली थी, कैसे? अब सुबह तो आना ही था, सुबह के लिए तो लॉकडाउन था नहीं। अब सर हम लोग भी लाहौर से आए हैं, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर से आ चुके हैं, तो जाने के लिए तो लॉकडाउन खुलेगा। इस तरह संक्रमण लगातार फैल रहा है, ऐसे में आपका इतनी भीड़ एक जगह एकत्रित होना कहीं ना कहीं सबके लिए खतरा है। हाँ, इसीलिए सुरक्षा लगाए हुए हैं, सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं। इतने लोगों को खड़े होने की भी अनुमति नहीं है, एक जगह पे ना बैठने की। सभी लोग सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं। सर यहाँ की अनुमति नहीं है, ये हम हाँ, यहाँ की इस विषय में मुझे जानकारी नहीं थी। तो देखिए किसी तरह की कोई जानकारी नहीं, ना तो कोई अनुमति ली है। जहां लॉकडाउन है और पूरे देश में एक तरह से सख्ती से इसका पालन कराया जा रहा है, वहीं तस्वीरें देखिए किस तरह से जो सपा कार्यालय की आपको कानपुर से दिखा रहे हैं, जहां पूरी तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन करते लोग नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ गौरव त्रिवेदी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, कानपुर। We are at the Guru Tegh Bahadur COVID Care Center that has been started in the Rakabganj Gurudwara, and this is a 400-bed facility that has been started by the Gurudwara committee, and this has all oxygen facilities, including the oxygen concentrators, cylinders, and this will start admitting patients tomorrow. And I have with me the chairperson, the president of Delhi Sikh Gurudwara Management Committee, Manjinder Singh Sirsa, to talk more about this, sir. This facility, how effective it is, how helpful it will be. I think this will be too much of helpful in this kind of crisis, especially when there are no beds available. People are dying without oxygen, people are dying without medical facilities. And this first stage we are operating on a 300 bed from tomorrow onwards, and then another 100 bed we added in one day. So not only this facility will give them a good health, but because it is with the passion of a religion also. Correct. So one have a confidence that I'm in the place where God is there and God will be helpful to me, God will be there for me, and God will be kind to me. So I think the emotional touch of this place will give a life to so many of patients who will be coming here for treatment. So a lot of help has come from abroad also, and you were telling us that Amitabh Bachchan has also donated for the cause. Please tell us about that. So Amitabh ji called me a few days back when he came to know that we are setting up this facility. He said, I want to contribute to save people. And he also not just contributed, but he was very concerned about the thing that how this facility will run and how much time more it will take. And every alternative he used to call me up and have picture of this place. He also managed to get me oxygen concentrators from abroad also. And he was very passionate about one thing, that Sikhs are true legends. और मैं सिखों की सेवा को सलाम करता हूँ. And the word he used कि पैसे की चिंता मत करो, कुछ भी करना होगा. आप सिरसा जी ये देखिए जाने कैसे बचाई जा सकती है. तो ऐसे लोग, today we need this kind of people who are not just real heroes, but I must say they are real heroes. So what about the doctors and the paramedical staff? That Delhi government is kind enough to help us on this. I would definitely thank the Delhi government, their chief minister, their health minister, who personally visited the site and ensured us that every kind of doctor, nurse, staff will be provided to you for the treatment. And he ensured us
that the patients will be treated here, and in case of emergency, they will be immediately shifted to a linked hospital for ICU, that is Lok Naik LNGP. Sir, what is the process? How can people come and get them registered? So anybody can walk in. Any patient can just walk in and get themselves registered here. Thank you so much for talking to us. And this facility will be a great relief for Delhi. A 400-bedded facility in Rakabganj Gurudwara's Lucky Shah Banjara Hall that has been turned into a COVID care center. And this has got donations from the Sikh organizations from abroad. Even Amitabh Bachchan has donated 2 crore rupees, as Manjinder Singh Sirsa informed. And this will have, each bed will have 1 oxygen concentrator, and also the oxygen cylinders will be there as a backup supply. The paramedical staff, the doctors will be present here, and if any patient requires ICU, he will be immediately shifted to the linked hospital, that would be LNJP. So this is one positive relief for Delhiites who are fighting the pandemic. इस सेकेंड वेव में त्रिपुरा का हालत दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। हर रोज़ कम से कम 300 से ज़्यादा एक्टिव केसेस मिल रहे हैं और डेथ कम से कम लगभग हर रोज़ 1-2 हो रहा है। तो जैसे कि अब कल रात तक त्रिपुरा में 351 एक्टिव केसेस मिला है, डेथ 1 हुआ है। तो अभी तक त्रिपुरा में एक्टिव केसेस है 37,556। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो उनके बारे में पूरा त्रिपुरा का हालत कैसा है वो जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। मिस्टर राजीव कुमार दुआ, DIG। We have been having the corona positive cases in 2 regards. The people who are returning from leave, some of them are found positive. Besides that, a sizable number of BSF companies were sent to election duty to West Bengal as well as other states. They have started returning. Their rapid antigen test is being conducted at the railway station, and whoever is found positive, they are taken to the COVID care center, and we have got quarantine centers designated, and the negative personnel, they are being taken to the quarantine center. I would like to inform you that BSF has established 11 COVID care centers in the entire Tripura state, and we are having 1 composite hospital at Agartala. Now there are almost 200 COVID patients in BSF at present, and out of those 72 are from this sector. The thing which is coming of a kind of little help to us, most of our men, they have taken the both doses of vaccination, and we do not have any serious case so far. हम इस समय हैं नेपाल के करीब बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो ये जोरावरडीह गांव है। यहाँ पर लोगों का जो आम जनजीवन है वो बिल्कुल इसी तरीके से चल रहा है कि बिल्कुल जो है सब शांत है। लेकिन यहाँ पर शांत के साथ में भी एक जो है ट्रेजेडी हुई है, और यहाँ पर जो उनके परिजन हैं, मैं उन्हीं से बात करूँगा कि गांव की जो ज़िंदगी है अभी तक बहुत ठीक ठाक चल रही थी, किस तरीके से देख रहे हैं। क्योंकि अभी आपके यहाँ भी एक कोरोना पेशेंट आए और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई, क्या कहेंगे आप? उनकी मृत्यु कोरोना पहले हुआ था, लेकिन बाद में वो सही हो गए। लोग इसका दहशत इतना ज़्यादा बना दिए हैं कि लोग कोरोना से नहीं दहशत से एक्सपायर कर जा रहे हैं, और उनको यही हुआ, कोरोना से नहीं दहशत से एक्सपायर हुए थे। क्या किस तरीके से ज़िंदगी चल रही है दादा आपकी? गाँव में ठीक ठाक चल रही है, कोई हमें परेशानी नहीं है। एक इंजेक्शन लगवा चुके हैं, दूसरा आज ही लगवाएंगे। फिर कोरोना का कोई डर है आप लोगों को? सुई से डर है। सुई से डर है? क्यों डर है? क्योंकि कोरोना जहर हो जाती है, इसलिए बुखार आती है। अच्छा, बुखार आती है। तो बुखार कोई भी वैक्सीन आप लगवाएंगे आएगा, लेकिन उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अमूमन काम है वो अपना कर रहे हैं। कोरोना का कोई इनको ज़्यादा भय नहीं है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। 2 गज दूरी और मास्क ज़रूरी है, जिसका पालन ये लोग कर रहे हैं। हम मौजूद हैं बिजनौर के दारा नगरगंज गांव में।
हम एक ऐसी फैमिली से बात करेंगे जिनकी फैमिली में कोविड के चलते एक मौत हो गई है। बुखार के बाद उन्हें एडमिट किया मंडे के दिन, फिर किसी ने सरकारी अस्पताल में किसी ने इलाज नहीं किया, उनका यूँ कहते पहले कोविड की जांच कराओ। कोविड की जांच के बाद उसने किसी ने गोली तक नहीं दी, फिर गंज में कराया उन्हें, गंज में भी उन्हें 8 बजे के बाद एडमिट किया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 11-11:15 बजे उनकी डेथ हो गई। पहले ये बोला कि कोविड की जांच कराओ, लेकिन जब कोविड की जांच कराई तो कोविड की जांच कराए हुए अभी तक 15-20 दिन हो गए, लेकिन अभी तक रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। रिपोर्ट में लैब रिपोर्ट नॉट रिसीव्ड बता रहा है, लेकिन जो हमने CT स्कैन कराया, CT स्कैन में तो कोविड खुला आ रहा था। और हमने बिजनौर में जब किसी ने भी एडमिट नहीं किया तो फिर अपने छोटे गंज अस्पताल में एडमिट किया, उन्हें ऑक्सीजन दिलाई, फिर भी उसके बाद कोविड की वजह से एक्सपायर हो गए। तो सरकार को भी इसके बारे में कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। और हॉस्पिटल में भी हमने देखा कि बहुत एक्सपायर हो रहे हैं, बिजनौर में बहुत मौतें हो रही हैं, कोई एडमिट करने को तैयार नहीं है। इस समय हम खड़े हैं मिर्ज़ापुर के ऐतिहासिक घंटाघर में, जहाँ पर कोरोना की जांच चल रही है। कोरोना ने जहाँ पूरे देश में कोहराम मचा रखा है, मिर्ज़ापुर भी उससे अलग नहीं है। मिर्ज़ापुर में कोरोना ने 10,000 का आंकड़ा पार कर लिया है और यहाँ पे जो कुल एक्टिव केस वर्तमान में है वो 1456 है। वहीं 77 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। शासन और प्रशासन के सख्ती के कारण मिर्ज़ापुर में कोरोना नियंत्रण में है। इस वक्त है मेरठ के आदिपुर अम्बेड़ा गांव में, जहां पर पिछले 7 दिनों में 7 मौतें हो चुकी हैं कोरोना की वजह से। क्या हालात हैं, शहर से निकलकर कोरोना गांवों में किस तरह से आ चुका है, जानते हैं इनसे। आपका क्या नाम है? राकेश कुमार। जो मृत्यु हुई है आपके क्या लगते थे? भाई लगते थे। आप ये बताइए कि आपको सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है? नहीं। क्या चाहते हैं आप, किस तरह की मदद मिल जाए? घर के उसमें जो बीमारी तो चली रही है ज़्यादातर, सही वो हो जाए। मैं इस वक्त मिर्ज़ा कॉलोनी में मौजूद हूँ। एक युवक जिसकी माताजी का कुछ दिन पहले ही निधन हुआ, उसकी पीड़ा कोरोना से जुड़ी हुई क्या है हम जानते हैं। क्या नाम आपका? शाहरुख मंसूरी। शाहरुख, कब आपकी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई, कहाँ लेके गए और क्या क्या हुआ? 14 तारीख को तबीयत ख़राब हुई और 16 तारीख को डेथ हुई। फर्स्ट 14 तारीख को 16 पलंग में बिना ऑक्सीजन के भर्ती करा और 15 को ICU में लिया और रिपोर्ट नेगेटिव बताई। 14 तारीख को जब भर्ती करा, जब ICU में करते तो क्या आपकी मम्मी बच जाती? मेरी मम्मी ICU नहीं मिला उस समय। ICU नहीं मिला उस समय। और 16 को जब डेट हुई तो डेड बॉडी लेने गए तो पॉजिटिव रिपोर्ट बता दी। आपको डेड बॉडी दी उन्होंने? नहीं, डेड बॉडी नहीं दी। जब ये सब हो गया तो सरकार आपकी कोई मदद करी? नहीं, अभी कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं, मजदूरी कर रहे। मम्मी की मौत के बाद में उनके बारे में कोई सरकार ने जानकारी ली या कोई कदम आगे बढ़ाया या आपकी कोई हेल्प हुई? नहीं, कुछ भी हेल्प नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप सरकार को? अब जो भी है सरकार, अब जो भी करे। एक युवक है जिसकी पीड़ा ये है, उसकी माताजी को समय से ICU नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, सामान्य पलंग पर भर्ती कर दिया गया। अगर समय पर उसकी माताजी को ICU मिल जाता, ऑक्सीजन की व्यवस्था मिल जाती तो शायद उसकी मम्मी की डेथ नहीं होती।